भाई मेरी आवाज़ जो हो रही है उससे आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा लग गया कि मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई है। अपेरेंटली गोइंग आउट एंड हैविंग आइसक्रीम इन द मिडल ऑफ नवंबर वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। एट लीस्ट इट वाज नॉट अ वेरी फोरसाइटेड वन कंसिडरिंग कि आई हैव एन एग्जाम टुमारो, not an exam in particular but a sessional nonetheless. And my only difference with psychology at work या HRM में जो भी पढ़ाया जाता है इसके a lot of it is not as applicable as one might think, at least in the Indian context. For example, HRM के अंदर आपको कुछ थ्योरीज पढ़ाएंगे कि if you can adequately structure the value ladder तो आप बहुत आराम से सेल्स कर पाएंगे. It doesn't necessarily work like that. इंडिया के अंदर हम लोगों का जो mindset है it's more oriented towards pricing. Like price really impacts the way we think about things, and also status. So if you can pair something which is considered high status with a low fee, people would be very skeptical of it. आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आपने कोई बहुत महंगी चीज़ बहुत अफोर्डेबल बना दी, but if you make it too affordable, people are going to start questioning the authenticity of whatever it is that you're offering, क्योंकि सब लोग इतना महंगा ऑफर कर रहे हैं, आप सस्ता कैसे ऑफर कर रहे हैं. It's actually one of the reasons के डायमंड्स इतने ज़्यादा महंगे होते हैं. Diamonds are not very rare, all right. Diamonds are actually pretty common. It's just that the capitalist industries made it appear as if के diamonds were pretty rare. एंड उन्होंने उनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया, उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करी फ्री मार्केट के अंदर, एंड उसकी वजह से वी रीच्ड अ स्टेज वेयर डायमंड्स वाज कंसिडर्ड रेयर. ऑफ कोर्स रेयर चीज़ को कोई क्यों खरीदेगा विदाउट प्रॉपर काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स. तो उसकी वजह से उन्होंने शादियों के अंदर डायमंड्स को एक बहुत ही कॉमन प्लेस बना दिया कि इफ योर मैन लव्स यू ही शुड प्रपोज यू विद द रिंग शुड बी दैट ऑफ डायमंड बिकॉज डायमंड सिग्निफाइज longevity. A diamond is forever, whereas we know कि not necessarily, right? Like there can be other items as well that last a lifetime and nobody seems to bat an eye over those. But yeah, that's the story behind it. So India के अंदर we really look at pricing, and जब भी मैं कोई ऐसी थ्योरी पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है अंदर से, क्योंकि my brain is constantly negating it. It's constantly going, yeah, but that's not true, that's not how it works, that's not practical. That's usually not how it has worked out, at least in my experience. Now, of course, I have an n is equal to 1 वाला bias, which is my sample size, सिर्फ मेरा खुद का experience है. So वो थोड़ा सा of course gives the benefit of the doubt to these theories. But I would be very interested in finding out कि high level official managers जो होते हैं वो कौन सी theories का use करते हैं, because I am tempted to think that instead of using any kind of HRM theories जो उन्होंने पढ़ी हैं अपने courses में, they usually rely on their experiences instead, जो उन्होंने अपने पास्ट जॉब्स के अंदर गैदर किया है, या फिर दूसरे लोगों से बात करके गैदर किया है, या फिर इवन मेंटोर से गैदर किया है. आई ट्रूली बिलीव दैट इफ़ यू स्पेंड 50 minutes talking to somebody who is very smart on a particular topic, I think they can teach you more about it than any amount of books will, at least शुरुआत में. So the basics are best cleared by people who are experts in their respective fields, and बाद में जो उसके बाद the cherry on the top होता है वो of course specialization आपको किताबों से मिल जाएगा. Some kitabs, of course, are written in a way that make it very difficult to read. And मुझे पहले ज़माने में तो समझ में आता था कि चलो उस वक्त के लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स काफ़ी अलग थे, अब तो हमारी लैंग्वेजेस काफ़ी क्रूड हो गई हैं कंपेरेटिवली. लेकिन मॉडर्न डे में अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, टू बी ऑनेस्ट इट्स हार्ड फॉर मी टू टेक देम वेरी सीरियसली, बिकॉज आई एंड अप थिंकिंग कि ये बस अपने आपको स्मार्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. आई थिंक one person was really close to me in the past. He used to tell me कि true measure of an author is to be able to write complex sentences with very simple words, and I to this day believe that to be true. कि अगर आप बहुत ही कोई complex idea convey करवा पा रहे हैं with very simple words, then you are you're a true author in the right sense of the word. And अभी की जो मैनेजमेंट की बात करें, the management theories that I read, जिनका मुझे कल सेशनल देना है, I look at them but my brain won't stop analyzing them. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस बदल नहीं रहे, इट्स जस्ट स्टडी ऑफ द पीपल इन वर्क इन्वायरमेंट्स. इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट अनएथिकल, लेकिन अब खैर एथिक्स की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे इस वीडियो में. आई से कि इट्स अनएथिकल बिकॉज द मेन एम ऑफ HRM एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज टू मैक्सिमाइज द मेंटल वेलबींग एंड productivity of the worker to be able to extract maximum profit from it, which is a very weird statement to have. अब हाँ, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट आवर मेन गोल. हमारा HRM का जो गोल है हमारा ह्यूमनिस्टिक है थोड़ा सा ज़्यादा. वी रियली केयर अबाउट द पर्सन, बट आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा वो प्रैक्टिस में आ पाता. आई थिंक एवरीथिंग दैट इज़ वेरी क्रूड एंड वेरी क्रूअल एंड वेरी रॉ फ्रॉम दी मैनेजमेंट साइड, वो तो रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो जाता है, लेकिन उसका ह्यूमनिस्टिक गुड साइड है
वो कम से कम इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अप्लाई करवा पाना मुश्किल है, जहाँ पे पहले से रिसोर्सेज की कमी है। लाइक थिंक अबाउट इट यार कि कौन सी हाउ बिग अ कंपनी वुड नीड टू बी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अफोर्ड मेंटल हेल्थ केयर पैकेजेस फॉर ऑल ऑफ देयर एम्प्लॉइज। जस्ट थिंक अबाउट इट। इंडिया में बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिनका जो इंश्योरेंस पैकेज है जो ऑफर कर रही है अपने एम्प्लॉइज़ को, वो उनका प्रॉपर तरीके से उनकी फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख पा रहा है। मेंटल हेल्थ को आई विल ऑलवेज प्लेस इंडिया के अंदर above physical health, because physical health is what you are really struggling with in terms of survival. Mental health के issues usually तब address होना शुरू होता है जब आपकी physical health थोड़ी सी improve हो गई होती है। Of course, if you're living in a middle class family तो कभी ऐसा हो सकता है कि your mental health in turn is impacting the decisions you make for the improvement of your physical health, and इस वजह से आपकी mental health is holding you back. But usually the limiting factor when people are confused about their mental health and physical health, it's actually their physical health. And yeah, I may get backlash for saying that, but that's just how it is. If you go to the gym, you're gonna feel a little bit better. The problem is not that you're not going to feel better if you go to the gym. The problem is that you don't feel like going to the gym, and that's why you don't go there. So the first step is always the hardest to take, because कोई momentum नहीं होता, कोई आपके पास maybe you don't even have like एक एग्जाम्पल और लाइक अ मेमोरी इन द पास कि हाँ यार मैं तब गया था तो मुझे अच्छा लगा था, तो शायद मैं अब जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगे। सो वो भी नहीं होता आपके पास। सो वो करना इज रियली टफ। एंड या आई हैव टू गिव अ सेशनल विच ऑन थ्योरीज दैट आई डू नॉट नेसेसरली बिलीव इन, एंड आई थिंक दैट्स द सैड पार्ट अबाउट एजुकेशन सिस्टम एज अ होल के इट्स नॉट टेलिंग यू, इट्स नॉट इवन नॉलेज। कैन यू कॉल इट नॉलेज इफ इट डजंट वर्क? नहीं, जस्ट कॉल इट आइडियाज। knowledge is ideas that truly work कहीं ना कहीं, राइट? और मे बी ठीक है, यू कैन आर्ग्यू कि लाइक नहीं, नॉलेज आइडियाज भी हो सकते हैं, आइडियाज ऑफ अदर पीपल कैन बी कंसिडर्ड नॉलेज, या बट दे हैव टू बी sufficiently relevant in today's time, which is why like हिस्टोरिकल आइडियाज़ कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता हम लोग क्यों इतना पढ़ा रहे हैं भाई लोगों को। एटलीस्ट नॉट इन द करंट कंटेक्स्ट तो हम नहीं पढ़ा रहे ना, हम तो उनको उसी कंटेक्स्ट में पढ़ा रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ क्या थे, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। हाउ इज़ दैट गोइंग टू ट्रांसलेट इन टू वट द पर्सन वॉन्ट्स टू अचीव? हाँ, अगर पर्सन वॉन्ट्स टू गो इन टू अकेडमिया, गो फॉर इट, जिसको जो पढ़ना पढ़े। अकेडमिया के अंदर मुझे लगता है कि there's a little more leeway about what kind of context you pick, and you can discuss very weird things in academia जो शायद academia के बाहर बहुत weird लगेंगी अगर मैं कहूँगा। For example, if I tell you कि sociology के अंदर there's a whole discussion on what a body is and who owns the body and are you the embodiment of your body, तो you would be like क्या बकवास कर रहा है भाई तू। And that's the reality of it कि academia के थोड़ा सा fails to remain in touch with reality कभी कभी। Same thing happens with psychology, by the way. We fail to remain in touch with the clients. We do not understand. We may say as much as we want कि clients को हमेशा regularly weekly sessions लेने चाहिए, but we fail to understand कि वो थेरेपी इस वजह से हो सकता है ना ले रहा हो कि उसको थेरेपी की ज़रूरत महसूस हो रही है, बट हो सकता है इस वजह से क्योंकि किसी ने उसको कुछ बहुत बुरा तंज दे दिया, या फिर उसकी लाइफ के अंदर अदर फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मेरा जो बिजनेस पार्टनर है अरसलान, उसने मुझे एक बार बताया था कि अब्दुल्ला, our marketing and our advertising is not the primary driver of somebody taking up therapy. It also depends on कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है at that moment. तो एक बाइंग विंडो जो होती है ना, वो बहुत छोटी होती है कंज्यूमर के माइंड में। आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, लेकिन इसका ये नहीं मैं अपने जोमेटो पे जाके भी आइसक्रीम ऑर्डर करूंगा। मैं नीचे चला गया, मेरा दोस्त मुझे मिल गया, एंड वी जस्ट सो हैपन टू बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द आइसक्रीम पार्लर, तो हम अंदर चले जाएंगे। दैट्स अ होल डिफरेंट डील। ऑलराइट, कल आई मेट सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड द ओनली रीजन वी हैड आइसक्रीम इवन दो वी हैड डिनर वाज बिकॉज हम लोग बस उसके जस्ट सामने खड़े हुए थे, एंड दैट्स द ओनली रीजन। तो अगर वो बंदा सोचा आइसक्रीम वाला कि मेरी आइसक्रीम बहुत अच्छी है इस वजह से यहाँ पे लोग आए, या फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा किया इस वजह से लोग आए, या बट लाइक फर्स्ट टाइम बायर्स यूजुअली डोंट कम बिकॉज ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। इट्स जस्ट लाइक रैंडम लक एंड चांस। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो जो रैंडम लक एंड चांस हो रहा है, यू पोजिशन योर सेल्फ इन अ वे कि वो रैंडम लक एंड चांस जब भी होता है तो you are there to extract maximum benefit from it. And yeah, I'm just gonna stop this video here because I feel sick and I feel rambly as well, and when I feel sick and rambly, it's not good for anyone. So take care of you.